हेलो एवरीवन। हम लोग ऑलमोस्ट सब मूव कर चुके थे कल रात को। संदीप आके बहुत हेल्प किया हम लोगों को मूविंग में। वी हैड अ डिनर एट संदीप्स प्लेस लास्ट नाइट और उसके बाद घर आए और इतना हिम्मत भी नहीं था कि व्लॉग करे या कुछ करे, अपडेट करे, तो बस सो गए। और आज ख़ास अनपैकिंग नहीं हुआ है, बट हाँ अभी मुझे थोड़ा सा अपना टीवी यूनिट आई हैव टू अरेंज दैट, और किचन का लाइक 80% हो गया है सेट और 20% आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि कहाँ क्या रखना है। इसके बाद आई एम रियली इन्जॉइंग कि नया घर है, नया वाइब्स है, और अभी तक वो पैकिंग और मूविंग का बॉडी एक और इतनी जगह पे मार लगा है, वो अभी बस हील हो ही रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम। रियली टायर्ड, बट अब कर क्या सकते हैं, वी हैव टू डू इट। एंड बस अपने आप को एनर्जी खुद से लाना पड़ता है और करना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। If you haven't watched my previous moving videos yet, then you will find the links in the description box. Don't miss it. Organizing the closet is one of my favorite chores and I enjoy doing it. Assembling the bed frame is a task. It nearly took us 4 hours to complete this.
Let's see the final look. This is our Buddha corner, my favorite place in this house. As most of you know, I am so obsessed with Buddha paintings and idols. It gives me positivity and peace. I hope you really enjoyed the process of organizing and the final look of our home. If you did, then you know the drill. Kindly remember to like and share the video. If you haven't subscribed yet, then please do subscribe and hit the bell icon to get the notification on my latest video. On that note, stay safe, healthy and happy. Bye-bye.